This video covers Bernoulli and binomial distribution. We'll start off with Bernoulli distribution and see what kind of questions can we solve with Bernoulli and binomial distribution. Okay. अच्छा. I'll start off with Bernoulli. It's a random variable which only assumes two values, 1 and 0. 1 represents the success and 0 for the failure. The probability of y, y is a variable which shows 1 if we get a success and 0 if it's a failure. And I would say that सक्सेस और फेलियर जो है वो रिलेटिव है. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी कैंसर प्रॉब्लम को मॉडल कर रहे हैं तो सक्सेस वुड बी फाइंडिंग आउट वेदर अ पर्सन हैज कैंसर और नॉट. ठीक है. अच्छा. probability of success or y is equal to 1 p and probability of failure is 1 minus p. ठीक है. where can we use this distribution? The simplest and most commonly used example is coin toss experiment, जहां पर we either get a head or a tail और इसकी बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई डिफाइन getting a head as my success, then probability of getting a success is half. If you consider a die, if I fix that success is having a face with number 3, then probability of success would be 1 by 6, right? So the probability of success changes with the problem we are interested in. Then, with the help of Bernoulli random variable, I can construct binomial. It is basically a sequence of n identical Bernoulli trials. Think of it as n coin toss experiments. And in each experiment, two outcomes are possible. Coin toss के example लें तो two outcomes are head or tail, or success or failure. ठीक है. As usual, we define success probability as p and failure as 1 minus p. We also assume that all trials are independent. मतलब क्या है? Coin toss की example समझे. That each coin independently gives heads or tails. यानी पहले कॉइन में क्या है उससे सेकंड कॉइन के आउटकम पे कोई फर्क नहीं पड़ा. अच्छा. मैं थोड़ा सा बर्नौली की एक्सपेक्टेड वैल्यू को भी कवर करूंगा. आप कुछ सेकंड स्किप कर सकते हैं if you already know it. What is expected value of a random variable? Note the formula for a random variable. Expected value can be defined as probability multiplied by the value summation over its value. ठीक है. Let's have a look. This is my Bernoulli random variable. मैं थोड़ा सा clutter इसमें remove कर देता हूँ. We have this Bernoulli random variable और इसकी expected value जो है it can be written as x times px. ये generic formula है, but in this case we have y, so I can write this as the expected value of y is equal to this, where y has only two values, 0 and 1. What I'm gonna do is I'll write these values. मैं बेसिकली समेशन को ब्रेक करके लिख देता हूँ. 0 multiplied by its probability and 1 multiplied by its probability. The probability of getting a 0 is 1 minus p, and probability of having 1, sorry, is p. So expected value of y is p. Similarly, I can find its variance by using this formula. I'm not going into too much detail, but using this table, you can calculate it. Let's have a look. इसको ज़्यादा आसान tabular फॉर्म से आप कर सकते हैं. For the variance part, first of all, create a column y
with values 0 and 1. Create another column y minus its expected value, which is 0 minus p. Expected value अभी अभी calculate की थी, and 1 minus p. Once you square this term, your answer is going to be p square and 1 minus p whole squared. Multiplying this whole thing with the probability, operate the moment आप इसका summation calculate करेंगे, you will get your answer. So 0 की probability थी 1 minus p, and for 1 it's p. आप कॉमन लेके ऐड करके सिंप्लीफाई करके आंसर निकालेंगे. योर आंसर इज गोइंग टू बी p times 1 minus p. So we can say that variance of x is equal to this, sorry, variance of y is equal to this. तो ऐसे आप इसका वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते. ठीक है. Now we just saw that we can basically derive binomial distribution from Bernoulli. और Bernoulli distributions से यूज करके अब बाइनोमियल के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, लेट्स लुक एट. First of all, we need to understand the binomial probability function. यूज क्यों होता है पहले ये समझ. It is used to find the probability of getting x number of successes in n trials. मतलब क्या, एक एग्जांपल से समझे. फॉर एग्जांपल, the probability of getting 3 heads in 10 coin toss. ठीक है. तो जो आपके नंबर ऑफ सक्सेसेस होंगे दैट इज x. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स और एक्सपेरिमेंट और it is n. You can use this formula to find the probability, which is n factorial over x factorial over this whole thing. ठीक है. इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से भी लिखा जाता है, दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी एक्स टाइम्स 1 माइनस पी इंटू एन माइनस एक्स. दिस होल थिंग is also represented with ncx, right? Now what is x? X is the number of successes. तो किसी भी n trials में या तो किसी के पास 0 successes आ सकती हैं या 1, and the maximum number of successes is n. तो x की रेंज को जरा आप जहन में रखिएगा, कुछ क्वेश्चन में काफी यूजफुल है ये. Then let's look at the first question. If a coin is tossed 5 times, as soon as you get your total number of trials, you label it with n. Part A, find the probability that exactly 2 head appears. तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी by default. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है p क्या हो. Since p is defined as number of heads, तो जो सक्सेस है वो लेबल हो रहा है as number of heads. तो probability of having a head in a coin is 1 by 2. Apply the formula n factorial over x factorial n minus x factorial p to the power x 1 minus p to the power n minus x, where n is equal to 5, p is equal to 1 by 2, and x is equal to 1 over 2. So just plug in the values. 5 factorial, 2 factorial, 5 minus 2 factorial, half to the power 2, 1 minus half to the power 5 minus 2. Right? So you can do it using calculator. आंसर कुछ इस तरह से आ जाएंगे कि 120 over 2 times 6, 1 over 2 to the power 5. You can calculate it. इससे आगे बहुत easy. Now I'll proceed to the second part. ग्रीन कलर से यहाँ पे सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखिएगा. एटलीस्ट 4 हेड्स. एटलीस्ट 4 हेड्स का मतलब है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4. अब
जब 5 टाइम्स आप टॉस करते हैं तो एटलीस्ट 4 का मतलब क्या है? आइदर द नंबर ऑफ हेड्स आर 4 और 5, उससे ज्यादा हो नहीं सकते, बिकॉज कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, राइट? सो वेरी सिंपली यूज द सेम फॉर्मूला जो इससे पहले आपने किया था, जस्ट प्लग इट इन डायरेक्टली। तो फॉर पी ऑफ 4 क्या होगा यहाँ देखिए, 5 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल टाइम्स हाफ टू द पावर 4 एंड हाफ टू द पावर 5 माइनस 4 इज 1, प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ 5 आप कर लेंगे, वो भी इसी तरीके से डायरेक्टली आ जाएगा। आई नो दिस इज वेरी इजी, कुछ इसके और एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि व्हाई व्हाई टू यूज बायनोमियल। दो बातें। पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज कांस्टेंट, मतलब कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी यूजुअली कांस्टेंट ही अस्यूम होती है। सेकंड, आउटकम्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब कोई भी दो कॉइन्स में हेड्स का आना इंडिपेंडेंट है, एक कॉइन से दूसरे को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है। Then, a regular tetrahedron has three red faces and one white. It is rolled 5 times and color of the bottom face is noted. What is the probability that red will end downward 3 times? अब देख, बाइनोमियल की एक आइडेंटिफिकेशन ये है, एक आपको दिया हुआ होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स विच इज n, एक आपको किया हुआ होगा required number of successes, and here success is equal to red face which appear on the tetrahedron. बस probability of success आपको given नहीं है, so you know that out of four faces, three of the faces are red. Right? Now it's very simple. Probability of having three red faces can be calculated using binomial. So this is probability, which is n is equal to 5, x is 3 in this case, probability of success is 3 by 4, and probability of not having a success is 5 minus 3 or 2, right? तो इस तरीके से अक्सर सक्सेस प्रोबेबिलिटी ना भी गिवन हो तो यू कैन कैलकुलेट इट। अच्छा, another example, I won't solve it much, मैं next topic पे जाऊंगा, that is polynomial approximation using Poisson। तो यहाँ देख लेते हैं पहले, the probability of getting a lift on any morning, जो भी probability गिवन होती है, it is usually the probability of the probability of success in this case is 0.6, number of days in a working week, उसके बाद यूजुअली आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स गिवन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अगेन, जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन हो, इट इज बाय डिफॉल्ट बाइनोमियल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन of getting n lifts in a week is n factorial over x factorial। अगर एग्जाम में आप कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली इसकी जगह ncx भी लिख सकते हैं, राइट? अच्छा, दिस इज पार्ट ए। पार्ट बी, द प्रोबेबिलिटी दैट द इंडिविजुअल गेट लिफ्ट्स ओनली ट्वाइस। अच्छा, यहाँ पे n पहले ही आपको 5 पता है, np इज 0.6, जस्ट प्लग इट इन इक्वेशन बी और आपको आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज 5 factorial 2 factorial 5 minus 2 factorial times 0.6 to the power 2, 1 minus 0.6 and 0.4 to the power 3, and there you get your answer, right? अब एक प्रॉब्लम आता है, द प्रॉब्लम इज often we are not able to calculate binomial using our own calculators. For example, if you have any doubt, try calculating binomial probability
of x is equal to 50 when your n is greater than 100. I mean, try to calculate this. You won't be able to do it on your regular calculators because this value is too large, right? Even आप 100 factorial नहीं निकाल सकते. So this is why we use Poisson approximation to binomial. मतलब we use Poisson distribution to approximate binomial. Now the question is, when can we do that? We can do that when number of trials are very large and success probability is very small. दो conditions है. N is greater than or equal to 100 and NP it should be less than equal to 10. अगर ऐसा होगा, so we will skip our previous formula which was this and instead use the newer formula. So yeah, we basically skip this part and we use this formula. ये फॉर्मूला पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से सिमिलर है. अगर आपने पॉइजन में कंफ्यूजन है तो एक वीडियो मैंने इससे पहले ऐड की थी, यू मे सी दैट. अच्छा, सेम वही चीज है, एन पी एक्स तीनों का यूज करता है, बट इसके अंदर कैलकुलेशन में बड़ी आसानी हो जाती है. ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. एग्जांपल 4. A survey reveals that 1 in every 20 Americans are in prison. The probability of success appears to be 1 out of 200, which is 0.005. Then it says a random sample of 500 Americans is considered, which suggests that n is equal to 500. And it asks us to find that at most 3 people are in prison. मतलब the number of people in prison must be less than equal to 3. This is at most 3. Okay. If we try to solve this question, the problem क्या है? N is very large and P probability of success is very small. Now the question is कैसे पता करेंगे? First of all, N is greater than equal to 100 and NP is less than equal to 10. ये दोनों के दोनों cases हो रहे हैं because if you calculate NP, it's 2.5 I think. Right? अच्छा. Now we can use the approximation formula that Px is equal to NP to the power x P to the power negative NP over x factorial. Here x less than equal to 4 means I need to add 4 probabilities: 0, 1, 2, 3 and 4. Just name it equation C. और फॉर्मूला में रख के आप बारी बारी इन सबको कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी सिंपली. लेट्स सी हाउ. x less than equal to 4 is going to be 0 के लिए आप स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को अगर चाहें. इजी है, बस आपने वैल्यूज रखना है, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सबसे पहले तो एनपी की वैल्यू रख ले. एनपी इज 2.5, तो ये बन जाएगा ये फॉर्मूला. और उसके बाद 2.5 टू द पावर 0 इंटू ई टू द पावर नेगेटिव 2.5 ओवर 0 फैक्टोरियल प्लस 2.5 टू द पावर 1 नेगेटिव 2.5 फैक्टोरियल. और इस तरह से बेसिकली 4 तक आपने सारे ऐड कर लेने हैं एंड देयर यू गेट योर वैल्यू. ठीक है, इसमें इतना ही है, बट इसके क्वेश्चंस पॉइजन बाइनोमियल के मैं इसमें नीचे लिंक में ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं. वो सॉल्व भी हैं तो सॉल्यूशन उसके अंदर हो. ठीक है, थैंक यू.